टुमारो कल मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स का एग्ज़ाम है यार, वही पढ़ाई चल रहा है। Look at the time. Look at the time. Early morning at 2. कॉफ़ी पी ली, 1 चम्मच ब्लैक कॉफ़ी। चल रही चल रही चल रही। Velocity potential function, it is defined as a scalar function of space and time such that its negative derivative with respect to any direction is respect to any direction moves. This defines a scalar function of space and time such that its negative derivative with respect to any direction gives the fluid velocity in that direction. It is denoted by phi. Mathematically, the velocity potential is given by pi is equals to is a function of pi is equals to x comma y comma z x comma y comma z। हो गया। तो फिर उसके नीचे दो फाइव अपॉन दो एक्स इज इक्वल्स टू दो फाइव अपॉन दो एक्स इज इक्वल्स टू क्या दो फाइव अपॉन दो एक्स इज इक्वल्स टू दिस ओनली नो दो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस दो माइनस ही था माइनस दो फाइव अपॉन दो एक्स तो बात दो जीरो अपॉन दो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस दो फाइव अपॉन दो एक्स दो वी अपॉन दो वाई इज इक्वल्स टू माइनस दो फाइव अपॉन दो वाई। u is equals to dou phi upon minus dou phi upon dou u dou x, v is equals to minus dou phi upon dou y, z is equals to w is equals to minus dou phi upon dou z। Then continue the equation for incompressible steady flow. Continue equation for incompressible steady flow is equals to dou u upon dou x plus dou v upon dou y plus dou w upon dou z is equals to 0. Now substituting that into this, खत्म। प्रॉब्लम यह है वही है स्ट्रीमलाइन फंक्शन। It is defined as a scalar function of space and time. It is defined as scalar function of space and time. Scalar function of space and time such that its partial derivative. It is defined as scalar function of space and time such that its partial derivative with respect to any direction gives the velocity such that its partial derivative. It is defined as scalar function of space and time such that its partial derivative with respect to any direction such that its
derivative with respect to any direction gives the velocity component 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 in right angles at right angles. It is defined as scalar function of space and time such that its partial derivative gives with respect to any direction gives the velocity component such that its partial derivative gives in any direction gives the velocity component at right angles to that angle. It is denoted by phi. It is denoted by psi and defined only for 2D flow. Phi is equals to f of x comma y. छोड़ दो मुझे छोड़ दो ना. फर्स्ट यूनिट खत्म हो रहा है और 2 यूनिट पढ़े ले. फर्स्ट यूनिट के एक चैप्टर नहीं करे ले. थर्ड यूनिट नहीं सिखाए ले. बर्नौली थ्योरम, भानुशाली थ्योरम पढ़ ले भैया. मेरे को 7 6 5 4 2 ब्रेक है 5 मिनट. पुशअप मारूंगा. पुशअप मारता. कॉफ़ी तो पी है मैंने. नींद चली जाए ते वो भी. पुशअप होता मारता ही नहीं. पुशअप्स बहुत ज़्यादा. दूध क्या पेट दिख. पचास मारता था यार. 25 भी बस हो रहा है. मतलब और मार सकता था. मैंने बस कर दिया. 2 मिनट हो गए. 5 मिनट ब्रेक. 3 मिनट बचे 5 मिनट के. गोभी गोभी. दो मिनट. चूचू करके आता हूँ.
Let's start. पाम्स को स्वेट आता है करके ये डालता हूँ, यही गीला हो गया है. I have sweaty palms. It is defined as scalar. It is defined as scalar quantity, scalar function of space and time, such that its partial derivative, in any direction, with respect to any direction, gives the velocity component in right angles to that direction. Gives the velocity component in right angles to that direction. It is denoted by psi and defined only for 2D flow. For 2D flow ऐसा कुछ है. Velocity potential function is only steady flow. Streamline function is for 2D flow. Okay. So dou psi upon dou x is equals to v. Dou psi upon dou y is equals to minus u. But let's write this without thing. इसको क्या हो जाता है बीच में लिखना ढंग से ख्याल ही नहीं करता है. तो ये पाम से स्क्रीन ऑपरेट होने लगता है बीच में. I have to fix this. It is ऐसे लिखना पड़ रहा है. देखो ऐसे लिखना पड़ रहा है. It is defined as the scalar function. It is defined as a scalar function. बिना लिखे देख रहा हूँ, बिना लिखे बोल रहा हूँ. Scalar function such that its partial derivative with respect to any direction. दो बार ये यार. Respect to any direction. कल 9 बजे एग्जाम. With respect to any direction. आगे बोल. With respect to any direction, the velocity component direction gives फेंकने ना में
चार्जिंग हुई इसका. Let's try. Yeah. With respect to any direction gives the velocity component velocity component velocity component right angle करेक्ट है. तो एट राइट एंगल, एक ही वर्ड नहीं आ रहा है. एट राइट एंगल टू दैट डायरेक्शन. To that direction. To that direction. Okay. It is ये ना नोट्स आपका फॉल्ट है ना, ये लैपटॉप का वन नोट का. इट इज डिनोटेड बाय, अरे यार त्रिशूल फिर से चालू हो गया. एक तो नींद आ रही है, ऊपर से ये बकचोदी रही. ऐसे पढ़ूँ? ऐसे पढ़ूँ भाई? अच्छा है क्या इसका? बस है वहाँ यार, इन भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना. थोड़ा कम है चार्ज, थोड़ा. CS रखा था डाउनलोड को, अरे हो गया. 9 GB और बाकी है. ये एक फंक्शन ही नहीं करा ढंग से CS, जब से लिया है तब से. नाइन्टी 8% हो गया. 8 GB बचा है. 2% 40 GB का गेम. क्या चीज़ था? प्रॉट स्विगर issued by प्रॉट स्विगर क्या है? दिस ये रूट सर्टिफिकेट इज नॉट ट्रस्टेड. टू इनेबल ट्रस्ट ये नहीं करना है. कहाँ से डाउनलोड? अरे फाइल लोकेशन
डाउनलोड्स में पड़ा है, डॉक्यूमेंट के डाउनलोड्स में पड़ा है। सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, क्या पता, रिसर्च करने का तो मूड नहीं है मेरा। Maybe it has blinking. It is, अरे यार इतना छोटा केबल दिया था, वाइट और ब्लू। चेक ना, it is denoted by now working, yeah working fine। xy where u phi do phi upon do x is equals to v, do phi upon do phi is equals to माइनस u। इतना एक फर्क है। अभी स्टडी और वेलोसिटी में क्या फर्क है? It is defined as scalar function of space and time such that its negative derivative or either partial derivative with respect to any direction, either be with respect to any direction, gives the fluid velocity in that direction। किसमें? velocity potential और scalar स्ट्रीमलाइन फंक्शन, स्ट्रीमलाइन फंक्शन में with respect to any direction थोड़ा देख लेता हूँ। हाँ, any direction at velocity component at gives velocity component इसे कैसा लगता है शोल्डर? velocity component at right angles to that direction। Don't trouble me, go problem। A streamline function is given by psi, a streamline function is given by psi phi x minus x 6y। Calculate the velocity components, also magnitude and direction for the and all set। So now a problem, a streamline चार्जिंग लगाने से हो रहा है क्या? स्ट्रीमलाइन फंक्शन is given by चार्जिंग लगाने से हो रहा है क्या? ये चार्जिंग निकाला तो it worked। phi is equals to phi, अरे चार्जिंग लगाने से हो रहा है। कैलकुलेट the velocity components, also magnitude and direction
of the resultant at any point. Hmm. So solution is dou phi upon dou x is equals to minus 2 मतलब माइनस नहीं आता है फाइव एक्स एंड दो फाइव दो यू आई गेस इंटू वी जाना चाहिए टू यू अपॉन दो फाइव इज इक्वल्स टू माइनस 6 without any variable. Dosai. Dosai, but the velocity component u and v in terms of stream function. स्ट्रीम लाइन नहीं है यार, एक स्ट्रीम फंक्शन है. टर्म्स ऑफ स्ट्रीम फंक्शन इज u इक्वल्स टू माइनस डो साई अपॉन डो फाई v इज इक्वल्स टू माइनस डो साई अपॉन डो एक्स. तो u वाला हो गया माइनस ऑफ माइनस, that is plus 6 units units is it 5 entities units units per second. साइ में पर सेकेंड नहीं आता पर सेकेंड. अभी रिजल्टेंट वेलोसिटी is equals to Balsolimeter root of pi square plus 6 square is equals to 25 plus 36, that is 25 plus 30 55 plus 6 is 61, root of 61 units per second. Direction is given by tan. अरे बाप रे. Direction is given by tan is equals to v by u. Direction is given by tan theta is equals to v by u. वही ढूंढनी है tan theta. तो tan theta is equals to v by u 5/6 is डायरेक्शन ढूंढने के लिए tan theta v by डायरेक्शन ढूंढने tan theta v by ये tan theta v by 9 बजे एग्जाम है कल. What do I do? Butsahi. Mama. बारिश का बोतसाही. और क्या? अरे बाप रे. साइज है 5 है तब this बजे
तो फाइव दिया है, टी दिया है, पॉइंट, सॉरी, साई दिया है, पॉइंट दिया है, फाइव ढूंढना है। तो सो क्या, सो u इज इक्वल्स टू माइनस दो साई अपॉन दो वाई इज इक्वल्स टू माइनस दो, वही था, फाइव दिया है तो दो वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो u इज टू वाई इज वन माइनस टू एक्स, एक्स इज टू टू, तो टू टाइम्स टू इज माइनस फोर, ओ एक्स का वैल्यू टू, so v with respect to x, to y, to 3, which is unique. No need. Ma, 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 ma. Dou phi upon dou x is equals to minus u. ये गुस्सा है वो. Dou phi upon dou x minus or minus dou phi upon dou x. Integration of dou phi equals to मैं तो इसका भी कर लूँ फिर. This is confusing. Dou psi upon dou x is equals to v, dou psi upon dou y is equals to minus u. और इधर u is equals to minus dou phi upon dou x, v is equals to minus dou phi upon dou y. पहला सादा लगाओ के बाद वड़ा पाव. कल फिर से देखता हूँ. अच्छा, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड, उसका थियरम है अभी जो मुझको समझ में आया है पर मैंने किया नहीं है, तो करता हूँ अभी. P plus dp by ds into ds divided multiplied by d. Self weight rho g
रो जी डी ई डी एस, रो जी डी ई डी एस, ये गया, ये गया, ये पैर पे लिखता हूँ। तो इसमें थ्योरी यार, एक तो लिखा है फुल कचरा है। कंसिडर अ सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल डी and length ds. The force acting on the cylindrical arc. Consider a cylindrical element of cross section dA and length ds. The force acting on cylindrical arc. Pressure force PdA in direction of flow. Pressure force P plus dou P upon dou S into ds into dA opposite to the flow. Now weight of the element वो भी opposite to the flow. यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन भाई, थ्योरम का नाम यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। समझी कि नहीं dude? मुझे नींद आ रही है, नींद भी नहीं आ रही मुझे, पीला आ रहा है। 3 मिनट में एक और ब्रेक आ गया है। अभी तो पुश मारे। लेट थीटा इज द एंगल and line of action and weight of element of flow. The resultant force of the fluid element in the direction of S must be equal to the mass of fluid element acceleration in direction S. Therefore, flow एक्चुअली वो इतने तो अच्छा ओके आप रो डी ए डी एस है इंटू एस वन। इसको रट्टा मारने का क्या बोलते हैं, फोर्स पी डी ए माइनस पी प्लस डो ए अपॉन डो एस इंटू डी एस इंटू डी ए माइनस रो जी, रो जी, रो जी क्या था वो, रो जी डी, रो जी डी ए डी एस, रो जी डी ए डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू रो डी ई डी एस इंटू डी एस वन। क्वेश्चन वन, where as is the acceleration in direction s, where as is the acceleration in direction xs, where as is the acceleration in direction s. Now as is equals to dv upon dt, where as is equals to dv upon dt, where as is equals to dv upon dt, where as is equals to dv upon dt. Equals to dv upon dt. Let us assume dv upon ds into ds upon dt plus v dvd plus dv upon dt cancels to 0 model.
VDV upon dt. अरे ब्रेक शुरू हो गया रे, ये बज क्यों नहीं रहा है? ये डाउनलोड, CSC is downloaded guys. कोई तो फालतू कैजुअल गेम लिखने का है मेरे को, टाइम पास कर सकूं। बस सिमुलेटर लो क्या? लंबे लंबे गेम है वैसे तो। हाँ बताओ। शीट वाल छोड़ो भाई, बंद करो इसको। एक घंटा तो सुनने मिले यार। चलो बिना देखे लिखते हैं। मैं डायरेक्टली लिखते हैं, डो पी अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी। ठीक है, डो पी अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद कंसीडर को लिखने का है। कंसीडर क्या लिखना है? कंसीडर में सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, इसका क्रॉस सेक्शन ये, इसका लेंथ ये। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, क्या लिखना है? प्रेशर, बी आर ई एस एस यू आर ई, प्रेशर फोर्स पी डी ए है इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सेकेंड वन अपोजिट डायरेक्शन प्रेशर फोर्स, और एक प्रेशर फोर्स है लेकिन वो है अपोजिट डायरेक्शन पे, वो है पी प्लस दो है क्या डी मालूम नहीं, बस दो ए बाई दो एस डी एस इंटू डी ए अपोजिट। थर्ड वन है खुद का डब्ल्यू आई डी एस टी वेट, जो है रो डी ए डी एस 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 करेक्ट। उसके बाद लेट करके लिखना है एंगल बी थीटा बिटवीन लाइन ऑफ ए सी टी आर ओ एन एक्शन एंड weight of the element, weight of the element। और एक ये भाई कुछ अजीब ही चीज है, एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये वाला नहीं, एफ एल ओ डब्ल्यू। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ। सो देयर फोर्स इज इक्वल टू पी डी ए माइनस पी प्लस डी पी डी दो एस डी एस डी ए माइनस रो जी डी एस cos theta is equals to rho dA ds into as, where as is equals to acceleration in the direction of s। इसे बात करेंगे now। now as is equals to
dv upon dt. Let us assume that dv upon ds into ds upon dt plus dv upon dt, where dv upon dt is 0, is equals to 0. Oh shit, is equals to क्या था मैंने तो याद ही नहीं. Shit. Is equals to v dv dt. Right. Is equals to v dv dt. इतना मैंने किया था, इतना बिना देखे लिखा आगे. सब्स्टिट्यूटिंग ए एस इन द इक्वेशन. ए एस क्या मिला है अभी? वी डी वी डी टी मिला है. अभी सब्स्टिट्यूटिंग ए एस वैल्यू इन इक्वेशन वन वो हमारा तो इधर ए एस है ना, उधर उधर डाल दो, नहीं आ गया. इधर पी दिखता है ना, उधर डो पी अपन डो एस लिखनी है क्या, क्योंकि डो पी अपन डो एस प्लस जी डी जेड अपन जी डी जेड प्लस डो वी डी वी. ओके, वी डी वी इक्वल टू 0 था ना. डो पी अपन रो था रे भाई. तू मरेगा, तू कल मरेगा. कल का दिन मुबारक हो तुझको. Okay, now ES is equals to V dV dt. सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन वन बोल के लिखा ही नहीं है. इन EQ1 तो EQ1 में क्या समझना है तेरी जो पी डो पी अपॉन डो एस डी माइनस डो पी अपॉन डो एस माइनस कुछ तो होता है क्या, दिस इंटू दिस करके देखते एक बार. सो पी डी ए माइनस पी प्लस डी पी, सॉरी डो पी डो एस डी एस. अरे पहला इसको माइनस करो, नहीं इसको मशीन तो इसका क्या होता है देखो. हाँ, माइनस पी डी ए प्लस डो पी टी एस डी एस डी ए. अभी ये इधर है पी डी ए इंटू है माइनस होता है. हाँ, ब्रैकेट ओपन हुआ तो पी डी ए वन, तो डो पी अपॉन डो एस डी एस बचा, सॉरी डी ए बचा. माइनस डो पी डो एस डी ए करेक्ट. वो सारे हैं तो ओके. सो माइनस डो पी डो एस डी ए माइनस रो जी डी, दो बार के लिखा है, रो जी डी ए डी एस कौन सा थीटा इज इक्वल टू रो डी एस डी ए इंटू एस था ना, एस के सब्सटीट्यूट कर लेंगे हम. टू डी एस डी वी डी वी अपॉन डी टी. बाद में डिवाइडिंग बोथ द साइड्स विथ क्या रो डी एस डी. पता नहीं यहाँ बसता है, बस करो यार. डिवाइडिंग
both the sides with rho dA ds, we get, इसको कैसा डिवाइड करोगे, किया भी नहीं किया, तो फिर वही तो वही। ओश, अबे प्रूफ करना है क्या? तो माइनस डो पी अपॉन डो एस, तो डी एस डी ए डिवाइडेड बाय रो किधर है, रो डी ए डी एस, तो ये गया ये गया ये गया ये गया, बचा रो माइनस जी डी ए डी एस, तो रो डी ए डी एस, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, बचा डी, बचा जी, बचना था जी डी ए में, जी डी जेड बचना है, जेड कहाँ से है, कॉस थीटा है बोल के आया रहेगा। उसके बाद इज इक्वल्स टू डी एस डी ए अपॉन रो डी ए डी एस, ये इंटू डी वी डी वी अपॉन डी टी, डी टी नहीं जाना है, डी टी कैसे जाएगा, कटिया गए क्या बुढ़ा, डी टी कैसे नहीं जाना, कॉस थीटा से ले लो बनता, डी डी अपॉन एच वाई पी डी जेड अपॉन डी एस, सीधा सीधा लिख दो, हो गया बस। सो टी पी अपॉन रो माइनस इक्वल्स टू जी डी जेड प्लस वी डी वी, खत्म है खत्म है भाई खत्म। चलो भाई थियरम तो हो गया यो बनवाली है। हाँ इसी को अभी इंटीग्रेट करना, नहीं हुआ ले थेलम यो, ये थेलम जान नहीं छोड़ेगा, लेकिन मानेगा, ये कहाँ से कहाँ आ गया है, इसी में बर्नौली बर्नौली's इक्वेशन from Euler's equation, so dp dou p rho plus gdz plus vdv इक्वल्स टू 0 था ना, मतलब कांस्टेंट, सबको इंटीग्रेशन, अभी द फ्लो, इफ फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल रो इज कांस्टेंट, करेक्ट है, डेंसिटी कांस्टेंट ही होगा ना, इनकम्प्रेसिबल समझते नहीं है, इफ फ्लो इज क्रोम compressible रो इज कांस्टेंट, करेक्ट। आगे क्या बोल, तो डिफरेंशिएट किया पी रो बचा, जी डी गया, का यहाँ वहाँ का किए हो बे, उल्टा पलटी है, डिफरेंशिएट तो हर जगह से डी गया अपना, तो जी जेड प्लस वी का स्क्वायर इज कांस्टेंट, देन पी बाय रो प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर जी, तो क्या है मन एलसीएम प्रो लहसुन हो,
एल्सियम किया तो बस जी दोनों साइड जाएगा, इधर टू आएगा, काम खत्म। तो क्या बनता है, पी अपॉन रू जी प्लस वी स्क्वायर टू जी प्लस जेड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दैट इज बर्नौलीज आपकी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, तो इधर से प्रेशर आ रहा है, ये क्या चीज़ है, डेटम लाइन है इधर, डेटम लाइन से 6 मीटर ऊपर एक साइड, 4 मीटर ऊपर एक साइड, D2 10 सेंटीमीटर है, D1 20 सेंटीमीटर का है, एक साइड से फ्लो है। हाँ, तो सेक्शन 1 D1 इज इक्वल्स टू, सो एरिया वुड बी दिस, D2 इज इक्वल्स टू एक्शन टू आंसर सेक्शन में करना है किसका, भाई तेरा नाम क्या है, नाम क्या है। क्या है, रुको भैया।